Namaste children, welcome to my channel. Today's topic is from Madhuban Sarl Hindi Patmala, class 5, chapter 3, Kaisa Puraskar. So Kaisa means how, Puraskar means reward. So what a reward. So this story gives us the incident that happened in Gopal Krishna Gokhale's life. So children, you know who is Gopal Krishna Gokhale? So he is Gopal Krishna Gokhale, our freedom fighter, one of the famous freedom fighter, Gopal Krishna Gokhale. He is the person, and this story explains us the incidents that happened in Gokhale's life. So let's move into the video and see what incident happened. अध्यापक जी गणित का सवाल समझा रहे थे. So गणित means mathematics, सवाल means question. The teacher was teaching mathematics. गोपाल कृष्ण बड़ी ध्यान से सुन रहा था. गोपाल कृष्ण was carefully listening to this subject. छुट्टी होने वाली थी. So the school was about to get over. बच्चे घर जाने की जल्दी में थी. And the kids were in a hurry to move back to their houses. इसलिए उनका ध्यान सवालों की तरफ नहीं था. सो दैट इज द रीजन देयर कॉन्सेंट्रेशन वाज नॉट टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. तभी अध्यापक जी ने कहा, सो एट दैट टाइम टीचर टोल्ड, ये 10 प्रश्न गृह कार्य के लिए है. गृह कार्य मीन्स होमवर्क. सो दीज 10 क्वेश्चंस आर देयर फॉर योर होमवर्क. मैं सोमवार को सबकी कापियां देखूंगा. सो कापियां मीन्स द नोटबुक्स. Somvar means Monday. So the teacher said, I would see everyone's notebook on Monday morning. सब प्रश्न सही सही हल करके लाना. हल करना means to solve. So everyone have to solve these problems and come. That's the instruction from the teacher. गोपाल घर पहुंचा. गोपाल reached his house. खाना खाया और गृह कार्य करने बैठ गया. So he had his food and started to do his homework. उसने जल्दी ही 8 प्रश्न हल कर दिए. सो इमीडिएटली ही सॉल्व्ड 8 क्वेश्चंस. 9वें प्रश्न में कुछ अधिक समय लगा और 10वां तो निकला ही नहीं. सो ही टुक मच टाइम इन सॉल्विंग द 9th क्वेश्चन, whereas 10th क्वेश्चन ही डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट. गोपाल ने बहुत कोशिश की, फिर हार कर उसे छोड़ दिया. गोपाल tried his best, but he could not solve the 10th problem. उसने सोचा, he thought, ये प्रश्न अध्यापक जी से ही समझा लूंगा. सो आई विल गेट इट सॉल्व्ड थ्रू माय टीचर इटसेल्फ. दूसरे दिन रविवार था. द नेक्स्ट डे इज संडे. गोपाल के चचेरे भाई उसके घर आए. चचेरे भाई which means paternal cousin. So Gopal's cousin came to his house. वे बड़ी कक्षा में पढ़ते थे. So he is studying in a higher class. गोपाल ने उनसे प्रश्न समझाने को कहा. सो गोपाल आस्क्ड हिम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. भाई ने तुरंत उसे हल कर दिया. सर एंड हिज ब्रदर इमीडिएटली सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन. गोपाल ने कॉपी पर उतार लिया, पर समझा नहीं, क्योंकि भाई के पास समझाने का समय न था. सो गोपाल इमीडिएटली कॉपीड द आंसर in his classwork, but he couldn't understand the question, how to solve it. Why? Because his brother doesn't have that time to make him understand this question. सोमवार को अध्यापक जी ने सबसे पूछा कि कौन कौन प्रश्न करके लाया है. So on Monday morning, his teacher asked everyone that who all has completed the question. कापियां देखी. So he saw all the notes. केवल गोपाल ने ही अपना हाथ उठाया. So only Gopal raised up his hands. उसने सब सवाल किए थे और सभी ठीक थे. So he solved all the problems and everything were correct. अध्यापक जी बहुत प्रसन्न हुए. So the teacher became very happy. उन्होंने गोपाल की पीठ ठोकी. So पीठ ठोकना means to say well done. So he patted on Gopal's back and said very well done. वे बोले, he said, गोपाल के लिए सब तालियां बजाए. तालियां बजाना means to clap. So the teachers told to all the students, so everyone clap hands for Gopal. Gopal, ये लो अपना पुरस्कार. Gopal, take this award. गोपाल ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए, whereas Gopal never extended his hands. वह बोला, so he said, गुरुजी, मुझे यह इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं. So Guru,
teacher, I don't have any rights to take this reward. मैंने एक प्रश्न स्वयं नहीं किया. So I didn't do one question by myself. मेरे भाई ने किया है. My brother solved this problem. मैंने तो उसे केवल कॉपी पर उतार ही है, ठीक से समझा भी नहीं. So I just copied the answer in the classwork and even I don't understand how come this answer had arrived. सच कहता हूँ, मैं अब भी यह प्रश्न हल नहीं कर सकता. So to be very honest, I even now I cannot solve this problem. इतना कहते कहते गोपाल की आंखों में आंसू आ गए. So telling this, Gopal eyes fell into tears. वह दृष्टि नीचे किए खड़ा हुआ रहा. So he just kept his eyes downwards. अध्यापक गोपाल की बात सुनकर दंग रह गए. So दंग रहना means shocked or surprised. So by hearing the Gopal's answer, teacher got very surprised. वे बोले. So the teacher said, गोपाल, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी पर बहुत प्रसन्न हो. So I am so happy with the way you told the truth and by the way you are so honest. हाँ, मुझे तब पर गर्व है. So I am so proud about you. यह पुरस्कार अब भी तुम्हारा है. So this reward is still yours. अब यह तुम्हारी ईमानदारी के लिए है. So now this reward is for your honesty. सच्चाई तथा ईमानदारी की भावना से भरे इस बालक गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था. The person filled with honesty and truth. So this kid, that is Gopalakrishna Gokhale's birth happened in the year 1866 in on 9th May. So he was born in Maharashtra in a small village of Ratnagiri district. पिता कृष्णराव गोखले तथा माता सत्यभामा बाई ने बचपन से ही गोपाल को स्वाभिमान और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था. So his father Krishnarao Gokhale and mother Satyabhama Bai. So though they both have taught him the stories of self-respect and honesty. So they have taught them. That means how to be self-respectful and how to be honesty during his childhood itself. माँ रात दिन पौराणिक कहानियां सुनाती. तो पिता वीर देशभक्तों के किस्से. So his mother was teaching him day and night. He was teaching him the Pauranik Kahani, that means the ancient moral stories, whereas his father was teaching him the brave patriot stories. बालक गोपाल सब किस्से कहानियां ध्यान पूर्वक सुनते. So the kid Gopal Krishna Gokhale, when he was a kid, he used to listen to all kinds of stories very carefully. यही गोपाल भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे. So this Gopal, so भारत की आजादी के लिए, for the India's freedom, लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले थे. So he was the person who fought for our country's independence. अंग्रेज सरकार की नीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई. So he just raised up his voice against the British government. अनेक पत्र और निशुल्क लेख लिखे. So निशुल्क means without a fees. So he wrote many letters and he wrote many free writings. 1885 में उन्होंने कांग्रेस की प्रथम राष्ट्रीय सभा में भाषण दिया. So in the year 1885 he gave his first speech in the Congress first नेशनल सभा. उनके जोशीले और प्रभावशाली भाषणों ने जन जन का मन मोह लिया. मोह लिया मीन्स अट्रैक्ट. जोशीले पैशनेट और फियर्सफुल स्पीच, प्रभावशाली इंस्पिरेशन. So his fearful and inspiration speeches attracted each and every person of our country. गोखले को भारतीयों की गरीबी सदा कचोटती रहती. Gokhale was very much worried about our India's poverty. कचौती means worrying factor. उन्होंने अंग्रेज अफसरों के टाट बाट पर होने वाले खर्चों का कड़े शब्दों में विरोध किया. So टाट बाट means in a grand way, खर्चों means expenses. कड़े शब्दों means hard words. Gopal Krishna Gokhale
was criticizing the British government for the grand expenses spent on British officers. जब बात बहुत बढ़ गई तो ब्रिटिश सरकार को एक जांच आयोग बिठाना पड़ा. So जांच आयोग means they set up an inquiry commission. So when there was a hard exchange of words between Gopal Krishna Gokhale and the British government. So the British government set up an inquiry commission to look into the issue. इस आयोग के सामने गवाही देने के लिए गोखले 1896 में इंग्लैंड गए. गवाही मीन्स विटनेस. To appear as a witness in this case, Gopal Krishna Gokhale went to England in the year 1896. गोखले ने निर्भीक होकर सरकारी अफसरों के खर्चों में आंकड़े आयोग के सामने रखे. So nirbhik means without a fear. That means not fearing. And ankde means figuring out the statistics. Ayog ke samne, before the commission. So Gokhale, without a fear, he just placed the statistics before the commission. और बताया, and he told कि भारतीयों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दी जाने वाली धनराशि भी अंग्रेज अधिकारी अपने सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं. So dhanarashi means the money, sukh suvidhaye, which means the facilities. So Gopal Krishna Gokhale is telling that whatever the money is being given to the British officers to spend on Indians' health as well as education, that they use it for their own facilities. उस समय भारत में ब्रिटिश राज था. So when he was giving this kind of a complaint, at that time Britishers were ruling our country. उनके विरुद्ध कुछ कहना बड़े साहस का काम था. साहस means courage. Talking against Britishers needs real courage, which Gopal Krishna Gokhale had at that time. गोपाल कृष्ण छोटे बड़े सबके साथ समानता का व्यवहार करते थे. So Gopal Krishna, with the younger, with the elder, with everyone, he was treating everyone equally, समानता. उनके हृदय में ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था. So in his mind, ज्ञान देने वाले, which means the person who gives the education, that means the guru के प्रति, for the guru, श्रद्धा, admiration, and सम्मान. सम्मान means respect. So for his guru, in his mind, he has a great admiration and respect for his guru. एक बार गोखले जी के मन में बंगला भाषा के साहित्य को मूल रूप में पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई. So one time Gopal Krishna Gokhale wanted to learn Bangla language from the basic, from the grammar itself. वे अपने नाई से ही बंगला भाषा सीखने लगे. So नाई means barber. So he thought of learning this Bangla language from his barber itself. सीखते समय नाई को कुर्सी पर बिठाते थे और स्वयं जमीन पर बैठते. So when he was learning this Bangla language, he made this barber to sit on the chair and he used to sit on the floor. 2-3 दिन तो पत्नी देखते रही. So 2 to 3 days his wife was watching all this thing. फिर बोली, then she said, इतने बड़े आदमी होकर आप नाई के पैरों में बैठते हैं, क्या आपकी बिल्कुल संकोच नहीं होता? संकोच means hesitation. His wife said, you are such a famous person, but still you are sitting down to the barber and you are learning this language. Don't you feel hesitated? गोखले बोले. So Gokhale is telling, सिखाने वाले का स्थान सीखने वाले से सदा ऊंचा होता है, which means the person who is learning, his place should be down than the person who is teaching you. गुरु में श्रद्धा रखे बिना कुछ भी सीखना संभव नहीं. So without having in respect on the teacher, any learning is impossible. ऐसे उच्च विचार थे गोपाल कृष्ण गोखले के. So this kind of a highest thought Gopal Krishna Gokhale had. Gopal Krishna Gokhale बहुत बुद्धिमान थे. So he was very much clever. महात्मा गांधी उनकी न्यायप्रियता और जोशीली रूप से बहुत प्रभावित थे. So न्यायप्रियता which means justice, जोशीले which means a fearful speech, otherwise passionate. प्रभावित, inspired. Mahatma Gandhi got inspired by Gokhale's justice,
and the passion he had towards the country. और उन्हें अपना राजनैतिक गुरु मानते थे. राजनैतिक गुरु means political guru. So Gandhi treated Gopalakrishna Gokhale as his political guru. वे समय समय पर उनसे सलाह भी लिया करते थे. So सलाह means advices or ideas. So Gandhi ji, time to time, he used to get advices from Gopalakrishna Gokhale. So this is all the lesson about. This lesson tells us about Gopalakrishna Gokhale's the attitude and how he was during his childhood. So I have explained you line by line. So children, do well and read well. Thank you.